Let's come to myriapod. Myriapods have number one feature, the one pair of antenna. Number two, they have cephalothorax. Number three, they have segments. Okay, the abdomen is divided into segments, and these segments are fused with each other. Can you see the segments on their body? And each segment has a pair of leg, right? Each segment has pair of leg. Now on the basis of the on their legs, उसके नाम है. They have many legs, तो उसका नाम है. उसके पास 100 या 10 legs है तो उसका नाम सेंटीपीड है. ठीक है. उसके पास मिलियन legs है तो उसका नाम मिलीपीड है. ठीक है. इस तरीके से नाम है ये इनके. And they are able to produce आपके पास और important feature है इसके. They have simple eyes and they can mate internally and externally, means they can lay eggs, or they have a different type of sexual reproduction method. Say, so the features which you need to remember is cephalothorax. They have one pair of antenna, they have segments on their abdomen, and which has one pair of leg on each of the segment, and they have simple eyes. ठीक है जी. फिर आगे आपके पास एरिकनाइड्स. Arachnids is a spider family. The example of the arachnid is spiders, scorpions, mites, and ticks. Okay. You know what are mites and ticks? Those you may find on the fur of the pets. ठीक है. Animal जो होते हैं उनके फर पे होते हैं, उनको ticks कहते हैं. They are blood sucking parasite. ठीक है. Their bodies are divided again into two regions. They have cephalothorax and abdomen. ठीक है. And what else they have? They have 4 pair of limbs. Sahi. And they have, other than the limbs, they have 2 pair of pedipalps. ये देखो. इनके पास legs के अलावा, have you ever seen spider? Spider. आपने देखा होगा स्पाइडर के फ्रंट पे ना 2 ऐसे क्लकर्स होते हैं जिससे वो चीजों को पकड़ता है. और जो स्कॉर्पियो ने आपने देखा होगा उसका पीछे ना वो होता है एक जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे वो पैरालाइज कर देते हैं, जिसमें पॉइजन होता है, जिसको हम उर्दू में डंग भी बोलते हैं. उसके बाद डंग होता है जैसे वो उसको किसी भी प्रे को जो है वो हिट करता है. ठीक है. दैट इज पेडिपल्प. द पेडिपल्प कंटेन द पॉइजन विच हेल्प्स इन देयर डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है. And there are 2 type of pedipalps. One pair used in reproduction, and the other is used to pierce their prey and paralyze them with the poison secreted by the gland at their base. And they have several pair of simple eyes. Simple eyes के बहुत सारे pairs हैं उनके पास. ठीक है. So that's why they are able to see in many directions. तो वो इसलिए जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भाग सकते हैं क्योंकि उनको दूसरी डायरेक्शंस नजर आ रही होती है. ठीक है. ये इसके फीचर्स हो गए. हाउ द पिक्चर्स, ये दिस इज स्कॉर्पियो, दिस इज स्पाइडर. ठीक है. ये आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इसके. एंड इन द हैव यू स्टडीड ऑल 4 ऑफ देम? इन द एंड देयर इज अ टेबल. इन द टेबल यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश देम. सही है. जैसे इसको अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो फर्स्ट टेबल इज अबाउट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हु फॉल इन दीज कैटेगरीज. इंसेक्ट है तो ड्रैगन फ्लाई, वॉस्प. एरिकनाइड्स है तो स्पाइडर एंड माइट. क्रस्टेशियंस है तो क्रैब एंड वुड लाउस. मेरोपॉड्स हैं तो सेंटीपेड एंड मिलीपेड. राइट. ये इसकी एग्जांपल्स होंगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द लेग्स, हाउ दे आर डिवाइडेड. Insects have 3 pair of leg. Arachnids have 4 pair of leg. Crustaceans have 5 or more than 5 pair of leg. Myriapods have more than 10 pair of leg, which are found on their segments. Okay. Then on the basis of the body regions, insect body divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen. Arachnid divided into cephalothorax, crustacean cephalothorax, myriapod cephalothorax. And the basis of antenna, insects have 1 pair of antenna. Arachnids do not have any antenna. Crustaceans have 2 pair of antenna, and myriapods have 1 pair of antenna. Okay. On the basis of the eyes, insects have 1 pair of compound eyes. Arachnids have several pair of simple eyes.
Crustaceans have one pair of compound eyes, and myriapods have simple eyes. And on the pages of the wings, insect have two pair of wings. Arachnids have, these are the features, other features, extra features. So insect have wings, arachnids have pedipalp, crustaceans have the gills on their through which they can breathe, and they have exoskeleton. Okay, and myriapods have the segments, and they have a very soft body. Okay, did you understand the arthropods? Would you be able to uh, distinguish each other on the basis of different characteristics? कोई confusion है तो बताओ, I'll clear it.